ঠাকুর বলছেন ভোজনের যে প্রবৃত্ত ব্যক্তি প্রতি গ্রাসের সঙ্গে যুক্ত পুষ্টি আর ক্ষুধা নিবৃত্তি আংশিক রূপেতে হয়, কিন্তু হয় বলকি দু গ্রাস খেলে আর খুব খিদা আছে আর বল আরো খিদা বেশি হয়ে এক এক অন্নের ভিতরে এই তিনটি আছে। অন্যতে গ্রাস তো ছেড়ে দাও, অনেকগুলি অন্ন মিলে একটি গ্রাস, প্রত্যেক অন্নেতেই ওগুলো আছে, কিন্তু একটি অন্নের দানা খেলে কি হবে? কিছুই হবে না। এই প্রকারে বুঝবে ইহার অনুভব অত্যন্ত দুর্লভ, অত্যন্ত সূক্ষ্ম। ভক্তি অথবা ভজনের সম্বন্ধে এই রকম বিচার। অতএব সাধারণ ক্রম দুর্লভ সূক্ষ্ম হলেও অভিজ্ঞ ভক্তগণ সাধকে ওদের কাজে দেখে, লক্ষণ দেখে কিছু কিছু স্থির করতে পারে। কে পারবে? যারা উন্নত ওরা ওই ক্রমকে দেখতে পারে, অনুভব করতে পারে। আমরা সাধারণ করতে পারি। এখন বলছেন ওই ক্রম আরম্ভ করছেন आदौ श्रद्धा। आपने बताया वैष्णव कुल नहीं छोड़ना है, बिना देख सुनी चलना। जब जीवन चला गया हम ये नहीं छोड़ेंगे। सिवाय बनवा के प्रश्न है, मेरा ये प्रश्न है। वैष्णव शिरोमणि वृंदावन ठाकुर ने बताया या तो कोई हारे दे पापी निंदा करे तबे राखी मानो तार सिरे ऊपरे, वो अन्य विषय। और हनुमान जी भी उनका दान करते वैष्णव थे। इस सामान्य विरोधी विषय তোমাকে যদি কেউ গালি দেয়, অপমান করে, তার বদলা আমি দিব, এইসব नहीं अपने के लिए तो गुरु बदल करते थे। गुरु मानने निंदा कर तार केरला पे वही तो पूछ रहे हैं हम लोग। निंदा यदि कर ভগবানের যদি নিন্দা করে, বৈষ্ণব নিন্দা করে, তাহলে কিন্তু আমার প্রতি যদি অত্যাচার করে, মানে নিজের ওগুলি হল দাস ঠাকুর বৈষ্ণব ঠিক ভুল কখন ওইটা স্তম্ভন না করা, এই তো হচ্ছে ভক্তির বিপরীত করাই। আর না হয় কান বন্ধ করে দিও। আর কি আছে এই জিজ্ঞাসা गुरु तो नहीं करते तो कैसा व्यवहार करें हम? कखनो कभी तरह राखते हैं बदला खबर था जाता अवश्य होता गुरुदेव कृष्ण कृष्ण भक्तय नमः। Therefore, how merciful is Sri Vishwanath Chakravarti Thakur. He is perfected soul, and in a state of full realization, he is very mercifully describing all these things in Madhurya Kadambini for our benefit. We have discussed how bhakti is independent and self-manifested, and by the mercy of the devotee she enters the heart. In the first stage of bhakti, sadhana bhakti, the first two leaves seen on the creeper of devotion at that stage are klesharni, the cessation of difficulties, and subhada, the attainment of all auspiciousness. Therefore, Pradesh Anubhava Bhakti. Srimad Bhagavatam describes, just like in eating, three things happen simultaneously. First, there is the satisfaction I am eating. Then comes nourishment to the body, energy. And last,
hunger automatically goes. Therefore, in the same way, one who surrenders to Bhagavan, he will have satisfaction. I am doing bhakti. He will feel nourishment. I am realizing the Swarup of Bhagavan and my own Swarup. And last, hunger goes, or vairagya, detachment will appear. Therefore, Subhadra means the attainment of all good qualities. Therefore, we should take our own pulse and try and understand. Even after 20 or 30 years of doing bhajan, have the qualities of Vaishnava entered my heart or not? Therefore, the attainment of these three stages, the attainment of these three things, satisfaction, nourishment and detachment, it will not occur immediately. But gradually, according to the amount we eat, gradually, in that regard we will realize these three things. But have these qualities entered our heart? We see like Sri Haridas Thakur, he was beaten in 22 marketplaces, but he was still praying, "Oh Lord, forgive them." Has that quality of forgiveness entered our heart? What about Trinadapi Sunichina Karoli Vasubhishana Amanina Madana Ketani Sarahari? Yudhishthira Maharaj, despite suffering so much at the hands of Duryodhana, still Yudhishthira Maharaj always desired the auspiciousness of Duryodhana. He never desired any ill fortune for him. Therefore, a Vaishnava can lead their life, but a Vaishnava cannot lead these qualities. Therefore, we should also think in this human life has a great responsibility. If a snake goes to strike us, and we beat the snake with a stick and kill him, that snake will experience no reaction in his karma. But as a human, we will suffer the result of that, because human life has great responsibility. Therefore, the gradation upon the attainment of these Vaishnava qualities, the gradation of this extinguishment of our suffering, it cannot be understood very easily because it's a very, very subtle point, very hard to see. But Uttam Vaishnava, they can see all these things. Sri Thakur Bhaktivinoda has said, by eating a little bit, that time we cannot understand if I just take one mouthful, has my hunger disappeared? Am I feeling strength? Am I feeling nourishment? We cannot understand by eating only one mouthful. Even in one handful of food, prasad, there are so many grains of rice. Therefore, by eating 1 grain of rice, will I feel satisfaction? Will I feel nourishment? Will I feel detachment? We cannot tell all these things. Therefore, it's very subtle, in a very subtle way, we should approach this topic. Then last, Prabhupada Maharaj asked, we are hearing that Vaishnavas should have all these qualities like mercifulness, like forgiveness, like tolerance. So we say like Hanuman, he became so angry, he burnt Lanka to ashes. Tigri Ramadas Thakur said, those who criticize Nityananda, I beat them on the head with a stick. So one may have a doubt, what type of Vaishnava quality is this? No, I beat them with my shoes, kick on their head. Therefore Buddha said this is another topic, but still, we should understand this is not in relation to our own respect or our own position. If someone blasphemes or criticizes us or cheats us or performs some bad behavior to us, then we should be humble, we should be tolerant, we should be all these things. But if someone does towards Gurudev and Vaishnava, then we can cut out their tongue, beat them on the head, or if we cannot do anything, then we just leave that place. But this is for Guru Vaishnava, we should not do this for our own pratishtha, our own position. Hello, Bhakti Uddhar. Bhakti
প্রারম্ভিক সব থেকে ছোট পার্ট হচ্ছে শ্রদ্ধা। এইখান থেকে শ্রদ্ধা ভালো করে বুঝব। শ্রদ্ধা বলে কাকে? श्रद्धा को अन्य उपाय वर्जन भक्ति मुखी चित्तवृत्ति विशेष, भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। और हमारे कविराज गोस्वामी बोलेছেন श्रद्धा कृष्णे भक्ति कइले सर्वकर्म। কিন্তু একটা বিচার করেছেন কোন সাধুদের সঙ্গে, যথার্থ সাধুর সঙ্গে একটি কোন সাধারণ লোকে कुछ हरि कथा इत्यादि শুনলে কৃষ্ণের সেবা করবার যে বাসনা উদিত হয়, এই হচ্ছে যথার্থ শ্রদ্ধা স্বরূপ লক্ষণ। কৃষ্ণ সেবার বাসনা যখনই তার হৃদয়তে উদিত হবে, তখন তিনটা জিনিস আছে: গুরু কথা, শাস্ত্রের কথা, আর ভগবত আদি। এইটাতে দৃঢ় বিশ্বাস করবে। এই তিনটির মধ্যে কোনোটা নাই, তাহলে শ্রদ্ধা উচিত হবে। এই তার বাহ্যিক লক্ষণ। প্রথমটা হচ্ছে স্বরূপ লক্ষণ, কৃষ্ণ সেবার ভাষা। আর এইটি চিন্তা দ্বারা যখনই তার হৃদয় উঠে আসছে, তখনই তাহার শ্রদ্ধা। এই হচ্ছে পারমার্থিক শ্রদ্ধা। জগতের লোকে প্রায় সাধারণ লৌকিক শ্রদ্ধা থাকে, পারমার্থিক শ্রদ্ধা। এরও মূলে আছে পূর্ব জন্মে সুশ্রুতি, জ্ঞান, অজ্ঞান। প্রথমে অজ্ঞানী থাকে, পরে জ্ঞান করে। এখন বলছেন ভক্তি মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্য প্রথম সোপান শ্রদ্ধা। এই যে ভক্তি সর্বজনী, জাতি তাতি কোন বিচার নেই, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, দেশি বিদেশি, সর্বত্র সব জায়গায় তারা করবে। এমনকি দুরাচারীরাও ভক্তি করবার মধ্যে অধিকারী। অত্যন্ত দুরাচারী ব্যক্তিও হরিকথা শ্রবণ করে, সাধু সঙ্গে ভক্তি মধ্যে প্রবেশ করে। কৃষ্ণ ভজনে নাহি, কৃষ্ণ ভজনে সবাই অধিকার। কিভাবে প্রতিভা সূত্র কি পুরুষ নারী। অতএব भक्ति के साथ, भक्ति साधन में जाति, पुरुष, स्थान, काल अपेक्षा न थाकले ओ श्रद्धा जरूर है। श्रद्धा नामे चले। एमनकी এই শ্রদ্ধা ভক্তি পাঠ তো প্রথম অবস্থা। কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপস্যার প্রতি শ্রদ্ধা না করে যদি করে, তারও স্থিতি হবে। কর্মীদের জন্য জ্ঞানী, যোগী, যত লোক আছে, শ্রদ্ধাপূর্বক ওই কর্মকে না করে, তার ফল প্রাপ্তি হবে না। অশ্রদ্ধয়া ভূতম দত্তম তপস তত্তম কৃতং জগৎ असाधिकृत्यते पार्थम न चे न च तत्प्रेत्य लोग। हे पार्थ, श्रद्धापूर्वक যারা হোম, দান, তপস্যা,
अन्यान्य कर्म अनुष्ठित कर ना कर श्रद्धापूर्वक असत लोक परलोके तारा फलदायक হবে না এই জন্য এরা ফল কখন দিবে শ্রদ্ধাপূর্বক করলে তার गीता के वचन अनुसार से श्रद्धा भी सभी साधन नष्ट अतः भक्तियों निष्ठ श्रद्धा चेतस संप्रसारवसाही जननी व कल्याणी योगिनम पतंजलि महर्षि योगेंद्र बोलते हैं चित्त संप्रसन्नता के चित्त संप्रसन्नता बोलने की चित्ते कोई विषय के संदेह আছে समस्त दूर হয়ে গেলে অর্থাৎ আমাকে ভক্তি করতে ভক্তি সম্বন্ধে যত রকমের সন্দেহ আছে আচ্ছা ভক্তি করলে টাকা পয়সা পাওয়া যাবে भक्ति करने की संसार के सब छेड़े दिखते हुए संन्यास लेना की जरूरी है এছাড়াও আর যত রকমের সন্দেহ আছে এই সন্দেহ দূর হয়ে যায় দূর হওয়ার পরে বস্তু বিষয়ে আনুকূল্য বস্তু কি কৃষ্ণ अनुकूले प्राथमिक बीजावस्था का बोध है श्रद्धा यही के बोले श्रद्धा अतः देखा जाए भक्ति संबंधे संदेह कोनो संदेह जो वस्तु के विषय में विश्वास करना ही सकता यही दूसरी संदेह का सब रकमें दूर हो गल भक्ति संबंध है आज वस्तु कृष्ण विषय के विश्वास रहेगा कृष्ण भक्ति कर रहे सब कम एक विश्वास जुड़े गल एक नाम एक श्रद्धा मंगल रूपी माता घाटी जोगी करते भक्ति जोगी ज्ञानी जोगी अथवा जे कोनो योगी संदेह कर रखा पड़े श्रद्धावान व्यक्ति ही कार्य सिद्धि करते कार्य अन्य लोग जाते श्रद्धा नहीं कीर्तन करी श्रद्धा नहीं अर्चन करी श्रद्धा नहीं रान्ना करी श्रद्धा नहीं अतत एखाने बसे आছি তাহলে কিছু হবে सिद्धि कर्म ज्ञान योग आदि सभी साधन के श्रद्धा आवश्यक ये बात ठीक किंतु भक्ति साधन में जो श्रद्धा तो ये विलक्षण भक्ति में जो श्रद्धा होती है वो अपन विलक्षण होती है वह निर्गुण और चिन्मयी होती और श्रद्धा हमारा भीतर पाती है किंतु वो ये भक्ति प्रति भगवान प्रति जो श्रद्धा हुई है এটা কি लौकिक वस्तु है परमार्थिक एवं चिन्मयी वह निर्गुण चिन्मयी भक्ति का साधन का प्रथम स्तर या सोपान प्रेम होच्छे अंतिम सोपान प्रथम सोपान श्रद्धा श्रद्धा निष्ठा रुचि ऐसा क्रिया के आदि श्रद्धा प्रसाद भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति ततो निष्ठा रुचि तथा शक्ति ततो भाव ततो प्रेमावृत्ति साधका नाम है प्रेम प्रादुर्भाव जीव गोस्वामी श्रद्धा और शरणागति के एकात्मक माने पर श्रद्धा शरणागति अर्थात श्रद्धा शरणागति एक ही ताकत मने कर गए क्योंकि शास्त्रों के अर्थ में सुदृढ़ विश्वास का नाम शास्त्रों के अर्थ में
শাস্ত্র যা বলছে ওর উপরে দৃঢ় বিশ্বাস, এর নাম শ্রদ্ধা। শাস্ত্রে ভগবানের শরণে শরণাগত ভক্তের অভয়, আর যারা শরণাগত নন তাদের ভয় হবে, এই উপদেশ আছে। অতএব শাস্ত্রার্থে দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা উদিত হইলে শরণাগতি দুটি ক্রাইটেরিয়া। কিন্তু ওই বলেছেন কি ভক্তের একই লক্ষণ, কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশ একই লক্ষণ আত্মসমর্পণ। এই শরণাগতি সাধকগণের বিবেকে বদ্ধমূল যদি না হয়, পূর্ণরূপে আসে না, তাহলে ভগবত ভজন সম্ভব নয়। जिन साधकों के हृदय में इतने प्रकार की शरणागति होती है, भजन में वे आगे बढ़ जाएंगे। आज जिनको शरणागति नहीं है वो भजन राज्य में नहीं बढ़ सकते। शरणागति मतलब मूल जी से से कृष्ण मार्ग আশা করেছি তো উদ্বিগ্ন সবসময় থাকবে, তাহলে শরণাগতি কোথায়? बोलो शरणागत हम कृष्ण के हो गए। कृष्ण एवं वस्तु मैंने तुमको शरणागत बनाया, तुम हमारे शरण में, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। और फिर वो घबराता है संसार के दुखों से, तो क्या हुआ? भक्ति नहीं, शरणागति नहीं। इन्हें पक्का विश्वास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज जैसा कभी प्रार्थना नहीं किया हे प्रभु हमको हमारी रक्षा करें, कभी नहीं। अम्बरीश महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारी रक्षा करें, जानते कि वो रक्षा करेंगे, छोड़ दिया और चक्र आकर के प्रत्या को मार करके अम्बरीश उनके पास दुर्वासा के पीछे दौड़ा। तो ये सब विचार है। हम लोगों को भी निर्भय रह करके चलना, कभी कभी घबरा जाते हैं, मत घबराओ। इस विचार में पक के ऊपर के दृढ़ बने रहो। ऐसा जो कर सकेगा भक्ति में बढ़ जाएगा। एक साथ में 50 ब्रह्मचारी 1000 लोग स्त्रियां पुरुष आते हैं, कोई एक भक्ति में बढ़ जाता है और फिर संसारिक कार्यों में लग करके नीचे चला जाता है और कोई सब ऊपर करते हुए इसका ये सब का यही कारण शरणागति किसी अवस्था में भी। हमारे गौरव दास महाराज ने गुरु जी को कहा तुम्हारा सब हम विपत्ति आपत्ति देते, निर्भय होकर करके रोके, और उनके दम पर, उनके आशीर्वाद के बल पर सर्वत्र निर्भीक बातों का प्रचार। অকিঞ্চন যথার্থ এইগুলি হবে ন কিঞ্চন, কিচ্ছু নাই, কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া আর কিছু নাই। এইটা তো একান্তিক ভক্ত হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে আত্মসমর্পণও আছে, তার মধ্যে প্রবেশে আত্মসমর্পণ। Therefore, we should make some endeavor to try to understand what is Shraddha or faith. It is the first awakening of this transcendence. The smallest fraction, when it enters the heart of Bhakti, the smallest fraction of Bhakti
enters the heart, that is called Shraddha. Thakur Srivastava said, Anupaya Bhajam Bhakti Mukchit Visheshita. When the mind is umukchita, when the mind is always running towards Krishna, this is one definition of faith. As Sri Krishnadas Kaviraja said, Shraddha Sabda Viswas ko hai Ishwar Nirishchoy, Krishna Bhakti koi Sadhkan Viktoy. Another definition is the determination, I only have to perform bhakti. By performing bhakti and satisfying Hari Guru Vaishnava, I have no need to satisfy anyone or anything else. Therefore, when this Shraddha enters the heart, that Shraddha will have a Sarup Lakshan and Tatastha Lakshan. The Sarup Lakshan, or the intrinsic characteristics of bhakti, the attainment of bhakti, is that one will have a great greed, a great desire to hear from bona fide sadhu. Oh, I must go there and hear. This is Sarup Lakshan of Shraddha. And the Tatastha Lakshan, the external definition of Shraddha, is that one will have a very, very strong belief in the words of Sri Guru, Sri Vaishnava and the Shastra. Therefore, internal and external symptoms of Shraddha. But that Shraddha will be of two types. Lokik Shraddha, worldly Shraddha, and Paramarthik Shraddha. That Paramarthik faith, that transcendental faith, is achieved by the association of sadhus. But who will achieve it? Only that person who has too much accumulation of Sikriti from their past lives. Therefore, Bhakti Devi, she is all-pervading. She has no discrimination. She is not dependent upon one's birth, upon time, place, circumstances, whether one is in a high family, low family, what species, a man, woman, no. Videshi, foreigner or Bengali. Bhakti never depends on all these things. Videshi. Everyone is qualified for Bhakti, and Bhakti is qualified to give mercy to everyone. Therefore, the first sprout of Bhakti in the heart is called Shraddha. Therefore now we should understand, without Shraddha, one cannot achieve any result in anything. Therefore, even the other paths like karma, like jnana, like home, like fire sacrifice, like yoga, even these inferior paths cannot give any result without Shraddha. Therefore, in all regards, faith is always completely necessary. Therefore, what to speak of bhakti? Therefore, when that faith enters the heart, one will automatically neglect all other paths, like karma, jnana, etc. Therefore, Patanjali said, if I understand, when the heart is happy, this is one symptom of faith. When the heart is happy. When someone is happy, this is the definition of faith. Therefore, also when there is faith there will be no doubts. For example, one is thinking, well, if I do bhakti, how will I get money? I've heard when you take bhakti, then you have to take sannyas, then how will I get enough to eat? Therefore, these faith, these doubts are destroyed by faith, Shraddha. Therefore, by faith only, all these different types of doubts and confusions will be dissipated. Therefore, Shraddha will be seen to produce the result that one will accept anything which is favorable for Krishna Bhakti and that which is in relation to Krishna, Hari Guru Vaishnava. Therefore, Bhakti, she is the mother, because she gives results to everyone. So is Shraddha. Bhakti is like a mother. Like a mother nourishes everyone, in the same way, Shraddha Devi, she gives the result to everyone. Therefore, if we perform any minimal bhakti without faith, that result cannot be achieved. If we chant the name without faith, we cannot get the result. If we hear Hari Katha without faith, we cannot get the result. If we worship the deity without faith, we cannot get the result. Therefore, in all regards, for everyone in all paths, the only necessity is faith. But one consideration in bhakti, that faith is of a special type, because it's paramarthik or transcendental.
Therefore, Shraddha, in regards to devotion, she is nirgun, beyond the qualities of material nature, and she is chinmay, transcendental. Therefore, this is called Paramarthik Shraddha. Therefore, Sri Rupa Goswami has said, Adho Shraddha. As that Shraddha, as bhakti increases, then we go through the progression of attainment of different levels. First is Shraddha, then Bhajana Kriya, Anartha Vritti, Nishta, Ruchi, Ashakti, Bhava, and Prem. This is the gradation of faith. Therefore, Sri Jiva Goswami is discussing, he says that faith and saranagati, surrender, is the same thing. Faith is complete Jita Viswas, a strong determination and a strong belief in the words of Shastra. Therefore, where there is surrender and where there is faith, concomitantly there must be an absence of fear. And where there is no surrender, no faith, then there will be a predominance of fear in the heart of that sadhak. Therefore, the conclusion is one who is not surrendered, that person cannot do bhajan. Therefore, surrender has 6 symptoms. One of them is Rakshasati Viswasa. Faith that Krishna will protect me, that Krishna will maintain me. Therefore, if someone says, Krishna, I surrender to you, and Krishna gives his hand, don't worry, I accept you as my surrendered devotee. Have no fear. Then where is the cause of fear? There will be no need for fear at all. Like we see in Prahlad Maharaj. He never prayed to Bhagavan, protect me from my father. Or Ambarish Maharaj, he never prayed, protect me from Durvasa. They had strong faith and automatically everything went on. Therefore, everything is dependent on Shraddha. We see in Padagram there is 50 brahmacharis and thousands of others moving here and there. Then some go up, they become developed, and some fall down into material desires. Why? It is all dependent only upon faith. Ask Sri Gaudashadas Babaji Maharaj, he gave the benediction to our Padma Gurudev. Oh, I take away all your obstacles, become fearless. Therefore, he was so fearless, he preached everywhere and was so successful. Therefore, faith and surrender produce fearlessness. Therefore, Pushpa Maharaj asked, what does akinchan mean? What are you hearing? Akinchan means that the devotee has no akinchan, no desire of anything except for Krishna. And therefore, one who has performed this Atma Samapan, complete surrender of the self, that person will have no fear.